great hosting and anchoring. How to be one of the finest host and great anchor. आज मैं आपको एक एक करके टिप्स दूंगा कि कैसे हॉस्टिंग को, एंकरिंग को कैसे शुरुआत की जाए। आप WWE की कमेंटेटर की बात करिए तो किस तरीके से उनका पिच हाई होता है, टोनैलिटी हाई होती है, बॉडी लैंग्वेज हाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 इज हुक योर ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। 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 माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट एम आई डूइंग टुडे? आज मैं क्या कर रहा हूं? Why am I doing so much acting actually? Do I have a purpose to do acting or a drama today? Of course not. I have a very big concern today, and today I have come with the topic of hosting and anchoring. जब हम कोई भी hosting और कोई anchoring करते हैं तो किस तरीके से उसको इतना इन्फ्लुएंशियल बनाया जाए, किस तरीके से उसको इतना खास बनाया जाए, so that it can be impactful and it can be effective. Let's talk about it and let's understand this, that how to do great hosting and anchoring. How to be one of the finest host and great anchor. We will discuss on this topic today. But before we proceed, we must have seen multiple people boring us in the auditorium, in the award functions, annual functions, anniversaries, and we are like कि कब जाएगा यार ये? अरे यार ये कितना पकाएगा यार, ये कितना रुलाएगा यार। अरे इसकी आवाज तो देखो जैसे लग रहा है कि कोई चिड़िया बोल रहा है। अरे इसकी आवाज तो देखो जैसे लग रहा है फटा हुआ बांस है। अरे इसकी आवाज तो देखो ये क्या डमरू की तरह डम 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 कर रहा है। A lot of miss sentences are used for you or for those people or anchors and hosts. But let's understand that what is the greatest way to actually learn this skill of hosting and anchoring, ladies and gentlemen. Language does not matter, but the way you are doing it matters. First of all, आज मैं आपको एक एक करके टिप्स दूंगा कि कैसे हॉस्टिंग को, एंकरिंग को कैसे शुरुआत की जाए, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसके अगल बगल वाली चीज को समझ लेते हैं। First of all, try to understand कि what kind of anchoring, what kind of hosting, what kind of program you are actually hosting. Right? What kind of program, what kind of function you're hosting? Is this the formal context? Is this the formal program? Or is this the casual meeting program? Is this a very professional official program, or is this a friendship or friendly environment program? First of all, define it, right? Try to understand it. In case if I am addressing a conference or hosting a program where the Prime Minister of India, where the President of India, where the Ministers of India, where the CGI, Chief Justice of India, all people, all delegates and dignitaries are participating in the program, I cannot be that casual that, hello दोस्तों, आज आपका स्वागत है, मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री के साथ। I can't be like this much funny, or I can't be this much casual, right? Because he is the Prime Minister of India, I must give respect. And उस वक्त इस तरीके के प्रोग्राम्स में, अवार्ड्स में हमारी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हमारी टोन वाइज आवाज, सारी चीजें बहुत स्मूथ और साधारण हो जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आप यहां पर आए हुए हैं और आपका आगमन हुआ है। भारत के राष्ट्रपति जो बहुमूल्य कीमती अपना कीमती वक्त लेकर आए हुए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं देखिए हिंदी और उर्दू थोड़ा मिक्स कर रहा हूं, बाकी वो आप देख लीजिएगा। मैं सभी मंत्रीगण का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो भी अपना बेशकीमती वक्त निकालकर इस सभा में आए हुए हैं और इस सभा का हिस्सा बने हुआ है। आप देखिए कि मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत न्यूट्रल हो गई, मेरी टोन बहुत साधारण, बहुत फॉर्मल, बहुत रिस्पेक्टिंग हो गई। बट सेम वे अगर मैं कोई सिंगिंग का फंक्शन या मैं कोई एनिवर्सरी का, किसी बर्थडे का, किसी शादी का, किसी डांस का, किसी एनुअल फंक्शन का, अगर मैं वहीं पे होस्टिंग करता हूं और एंकरिंग करता हूं, माई टोन, माई बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग इज गोना बी चेंज्ड.
Ladies and gentlemen, welcoming you in one of the finest evening, one of the enlightening evening. Ladies and gentlemen, today you will have a glimpse and the glimpse of one of the most special and beautiful evening. And I want to say that all the rappers, singers, all the performers, dancers, composers, musicians, directors, actors, actresses, and all the biographists and writers, all the people are going to participate in one of the best award, the film industry award, or one of the greatest singing competition today, one of the most special dance competition today. आप इस तरीके से आप अपनी आवाज को, अपने अंदाज को आप बुलंद कर सकते हैं और बोल सकते हैं, बिकॉज वो एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है जहां पे आपको अपनी कला दिखानी है. सेम वे when you go with the high pitch, for example, if you talk about the commentator of the WWE, आप WWE की कमेंटेटर की बात करिए तो किस तरीके से उनका पिच हाई होता है, टोनैलिटी हाई होती है, बॉडी लैंग्वेज हाई होती है. Why is it so? Because in WWE, World Wrestling Entertainment, because there is a fight, there is grappling, there is scuffling. That's why they have to be more pitching and more louder. Hey, you are gonna have the glimpse and the glimpse of one of the giant beast of WWE. Ladies and gentlemen, we have the death, we have the killer, Undertaker, ladies and gentlemen. And now I just want to say that, one of the finest and one of the beast of WWE, Roman Reigns, and the finest player, Brock Lesnar, is gonna come in the ring. Now let's see this great fight, ladies and gentlemen. Let's see what's gonna happen today in the ring of WWE, and I think it's gonna be one of the most memorable moment in the history of WWE. अब आपने देखा कि मैंने कैसे WWE को इतना ज्यादा स्ट्रेसिंग किया है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैंने किस तरीके से अपने गले पे वोकल पे काम कर दिया कि उसको हाईलाइट कर दिया. इन सब की बात में हम लास्ट में भी करेंगे आज के सेशन में, बट सबसे पहले समझते हैं हाउ टू स्टार्ट द अवार्ड, हाउ टू स्टार्ट होस्टिंग और हाउ टू स्टार्ट एंकरिंग. किस तरीके से शुरुआत की जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. सो लेट्स अंडरस्टैंड द टिप नंबर 1, और यू हैव टू पॉइंट आउट, एक एक पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 इज हुक योर ऑडियंस. हुक, पॉइंट नंबर 1 इज hook. Hook means बजाना, पैंट में हुक होता है ना जो बजाता है. So point number 1 is hook. And what do you mean by hook? How can you hook? Just when you want to hook your audience, when you want to hook your people or the audience, well-wisher, fans sitting around you or watching you, listening to you, you can hook by saying any quotation, using any quotation. Just like that, Bill Gates said that if you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Darkness can never drive out the darkness, but light can drive out the darkness, ladies and gentlemen. Gandhiji once said that if you want to just find yourself, lose yourself in the service of others, you can start with any quotation. That's gonna be the most helpful for you. Hooking point, this is called. Another thing, you can put any शायरी, हिंदी, उर्दू, राइट. ये सुबह आपकी सुहानी हो जाए, दुखों की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशी ये नया दिन आपको कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए. Ladies and gentlemen, the point number 3, you can start with asking any question or excitement of your audience. Hey everybody, good morning, how is the Josh? The people will say, hi sir, hi buddy, come on. You can ask the question of excitement and ask the question about their feelings and emotions that is gonna really help, to connect and hook to your audience, right? You can also say any of your life example. You can also just tell any story, because storytelling is the biggest art. Storytelling is the biggest art, and if you are a storyteller, you are the biggest artist in the world.
So try to tell the story. Right. And try to also give your life and talk about your life's incidents. This can also be one of the most and the biggest hooking point. This is the tip number one and the point number one, ladies and gentlemen. And also you can start with any activity, any random activity, any question, all right, by doing any warm-up session, visualizing the people, and a lot more activities are there, ladies and gentlemen. Point number two, please try to understand. Please try to understand. Point number two is that greet. You try to greet, right? And greet in an effective way or a good way. Assalamu alaikum, namaskar, sat shri akal, good morning. मैं आज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं, किस्मत वाला समझ रहा हूं कि आज मुझे इस मंच को साझा करने का या साझा करने का मौका और अवसर मिला है। आज इस मंच पर खड़ा होके मैं ये समझता हूं कि आज मैं दुनिया का वो खुशनसीब इंसान हूं जिसने इस मंच को सराहने का जिसको मौका मिला है और अवसर मिला है। इस मंच के थ्रू, इस मंच के माध्यम से कुछ अपने शब्दों को प्रकट करने का और बयान करने का मौका मिला है। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करना चाहूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू या टिप नंबर टू क्या है? टिप नंबर टू इज दैट जस्ट ग्रीट। आप ग्रीट करिए। ग्रीट बहुत ही आसान शब्दों में करिए ताकि वो इंसान इन्फ्लुएंस और कनेक्ट हो जाए। जैसे गुड मॉर्निंग। अब ग्रीट हमेशा देखिए, ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर निग्लेक्ट और इग्नोर कर देते हैं। प्लीज ग्रीट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। What is top to bottom? Top to bottom means who is the most senior or the biggest designated person. Please greet him or greet her first, right? You cannot leave the principal of the school and you can just greet first to the teacher of the school, right? You cannot leave the teachers of the school and you can first greet to the students of the school. This is a wrong actually technique of greeting. That is why please greet from the top to bottom, क्योंकि पैसा उसी की जेब से निकलना है, तालियां वही बजाएगा और वो खुश हो गया तो नीचे वाले खुश हो जाएंगे। ये एक टेक्निक होती है टॉप टू बॉटम आना है ग्रीटिंग करने। मैं यहां पे बैठे हुए राष्ट्रपति जी का शुक्रगुजार हूं, प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, मैं सभी मंत्रीगण का शुक्रगुजार हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का शुक्रगुजार हूं। मतलब इन दिस वे, इस तरीके से करके यू कैन एक्चुअली ग्रीट। आप ग्रीट कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं और अभिनंदन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर बिग विक्स पर्सनैलिटीज। द पॉइंट नंबर थ्री और द टिप नंबर थ्री पे आते हैं। टिप नंबर थ्री इज दैट प्लीज इंट्रोड्यूस and give a great and very fascinating introduction, right? Thank you so much. And just first of all, I would like to talk about myself, that my name is Abdullah, the founder and the director of the Happiness Institute. And today I am your host and dost and today's anchor. And it's really amazing to be. देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया? आपने पॉइंट नंबर वन में आपने हुक किया, पॉइंट नंबर टू में आपने ग्रीट किया, पॉइंट नंबर थ्री में आपने जो है इंट्रोड्यूस किया, पॉइंट नंबर फोर्थ में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर फोर्थ में यू हैव टू एक्चुअली टॉक अबाउट योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स फॉर द पर्टिकुलर डे। उस दिन जो आपकी रियल में फीलिंग्स और इमोशंस है उसको बयान करिए। आई फील वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी, आई फील वन ऑफ द most honored today. I feel so delighted, enlightened. I feel so grateful. I feel really jubilant, fantastic, miraculous, supercalifragilisticexpialidocious. I feel stupendous, tremendous. I feel the best version of myself. I feel the best moment of my life. I feel the best and one of the most and one of the foremost day of my life, because I am sharing this stage with a lot of legends people. मैं इस जिस टोन में बोल रहा हूं उस टोन में एग्जैक्ट आपको नहीं बोलना है, but you have to understand कि according to situation or scenario or program you have to change the tone, right? I hope you would be getting my points, right?
आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बतानी है, साथ साथ में अगर इनफॉर्मल या कैजुअल तरीके का प्रोग्राम है तो उनकी भी इमोशंस और फीलिंग्स को आप जान सकते हैं और पूछ सकते हैं. हेलो एवरीबॉडी, आई फील सो एक्साइटेड. व्हाट अबाउट यू? हाउ डू यू फील टुडे? डू यू फील रियली फैंटास्टिक एंड कनेक्टेड? आर यू वेटिंग फॉर समथिंग ग्रेट टू बी हैपन टुडे? You can ask these questions for exciting your audience, to excite your audience, right? That's really very remarkable point to engage your audience. Very important. We have discussed about 4 points, right? We're now coming to the 5th point. That's really very important. That's about paying your gratitude, paying your thanks, talking about the contributions of the people who all have just contributed for the particular program and award. I pay my deepest gratitude to Chopra sir. अगर वो मेन है. I pay my deepest gratitude to Gupta ji. I pay my deepest gratitude to Maulana Sahab. I pay my deepest gratitude to Pandit ji. I pay my deepest gratitude to the Prime Minister of India. I pay my deepest gratitude to the director and founder of Happiness Institute, Mr. Abdullah Sir. So in this way, you can actually pay your gratitude, and this shows your positive attitude, and this is the most important, because if you miss it, you will be out of the zone, you will be out of the particular context and the award. That's why there are few lines. आपने कुछ लाइन सुनी होगी. I would like to thank अब जब से आईफा अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर हो गया, जी सिने हो गया, या ऑस्कर अवार्ड हो गया, या these awards are there. So you must have heard the lines that today's award function is powered by Jio Dhanadhan, co-powered by Dabal Lal Dantmanjan, and also co-powered by Hero Honda, and also Super Plus and Super Splendor, and also co-powered by Nokia and Samsung, and also co-powered by दारू नहीं बोल सकते, गलत बात है, co-powered by इलायची, राइट. तो इस तरीके के आपने बहुत सारे शब्द ऐसे ऐसे सुने होंगे. यू मस्ट हैव हर्ड दीज सेंटेंसेस. तो ये क्रेडिट देना, कंट्रीब्यूशंस की बात करना, उनका शुक्रिया अदा करना, वहां पे भी टॉप टू बॉटम, जिसने 1 करोड़ दिया उसका पहले कर लो, 50 लाख वाले का बाद में, 25 का फिर से, फिर 12 का फिर से, फिर जो है 5 का फिर से. यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस टेक्निक्स. आपको ये टेक्निक फॉलो करनी होगी, एंड दिस विल मेक यू द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंड इनक्रेडिबल orator, presenter, speaker, anchor, and host of the era and of the time. See you very soon. Hope you will follow the techniques and the tips. Thank you. God bless you.